ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Saints do not belong to a particular faith or group. They belong to humanity at large and are bearers of God's divine message of love, peace and harmony. ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਧਨੀ, ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ, परम सत्कारयोग बीबी बलवंत कौर जी, फाउंडर चेयरपर्सन बेबे नानकी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्हों ने सारी उम्र धर्म कारजां विच लगा दी, दीन दुखियां की मदद करना, बेसहारियां का सहारा देना, सच्चे पातशाह धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के नाल जोड़िया, संगतां नूं जोड़िया, बेबे नानक जी का इतिहासक याद कायम किया। जिमें जिमें बीबी जी बेपरवाह होकर चलते रहे, समाज भलाई दे काम करते रहे, परोपकारी दे कार्य करते रहे, परोपकारी वाले लोग संगत के रूप दे विच मिल के बीबी जी होना दे नाल मोढे दे नाल मोढा दे के सहारा बने। जिस तरह बेबे नानकी गुरुद्वारा सुल्तानपुर, बेबे नानकी गुरुद्वारा बर्मिंघम, माता नानकी चैरिटेबल हॉस्पिटल आनंदपुर साहब, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पावन पितर नगरी ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਲਾਜਵਾਬ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮੂਰਤ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪੁੰਜ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ,
भैन जी डॉक्टर हरचरण कौर सग्गू, जिन्हों ने बीबी जी होना की संगत की। आप जी 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ बीबी जी होना मिले ਅਤੇ बीबी जी होना ने आप जी ਨੂੰ बड़ा ही प्यार दिता ਅਤੇ प्यार मिलिया। गुरु जी की पार बख्शिश सन 2000 ਵਿੱਚ बीबी जी ने बीबी जी होना तो इन्हों आशीर्वाद मिलिया। महापुरखों के जीवन लिखना, महापुरखों की बायोग्राफी लिखनी बड़ी ही मुश्किल है। सो इन्होंने बड़ी ही कोशिश की। उन्हों की लाइफ डॉक्यूमेंट करने का चाह पैदा होया इन्हों के मन के विच। परम सत्कारयोग बीबी जी होना ने इन्हों सन 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ आशीर्वाद बख्शिया तो वह आशीर्वाद लैके इन्होंने जो वो परम सत्कारयोग बीबी बलवंत कौर जी की बुक है उसनों शुरू किया। अप्रैल 2014 ਵਿੱਚ 13 साल बाद बुक रिलीज़ की गई। इंग्लिश वर्सन जो रिलीज़ किया गया वो 27 जुलाई 2014 ਨੂੰ ਅਤੇ जो पंजाबी ਦੀ वर्शन बेअंत उत्साह ਉਹ 25 नवंबर 2015 ਨੂੰ गुरुद्वारा बेबे नानकी जी बर्मिंघम विखे रिलीज़ की गई। गुरु प्यारी सवारी साध संगत जो गुरु महाराज के चरणों के विच चौंकने मार के सज रहे हो, निजी गोद का आनंद माण रहे हो। मैं कोई विचारवान नहीं, कोई ज्ञानी च ज्ञानी नहीं, तो कोई सोझी वाली नहीं हैगी, तो ना मैंने साध संगत दे विच बोलण दा कोई मेरे च समर्थ है। वाहिगुरू वाहिगुरू जी दियां सिफतां सिख रोज रोज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो सुनदा तो उसनूं वाहिगुरू बड़ा ही प्यारा लगन लग जाता। जदों वाहिगुरू जी दियां सिफतां सिख रोज रोज सुनदा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो सुनदा तो उसनूं वाहिगुरू बड़ा प्यारा लगन लग जाता है ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ दिल ਕਰਨ लग जाता है कि ऐसा वाहिगुरू मैनू भी जे मिल पवे तो मैं कितना भागा वाला हो जाना। ऐसा वाहिगुरू मैनू भी जे मिल पवे तो मैं कितना वडभागा हो जाना। इस अवस्था दे गुरसिख नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फेर दस कि वाहिगुरू तैनू मिल सकदा, मिलन मगरों तेरा ही तेरा हो सकदा। वाहिगुरू तेरे बहुत नेड़े, तेरे अपने अंदर है, तू उसनू अपने अंदरों ही वेख सकदा है, पछाण सकदा है, मिल सकदा है, समझ सकदा है, उस वर्गा जां उसदा रूप बन सकदा है। गुर की भगत कर है क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जानी। सतगुर अलख कहो क्यों लखिया, जिस बख्शे तिस है पछाता है। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता। जिनको ठाकर कृपा धारी, बाहां पकड़ नानक काढ़ ली। गुरमुख गुरु ग्रंथ जी दे बचना ते चल के आखे लग के जप तप सिमरन कमाई घालना मगरों निमाणा ते निथावां हो के रब दी मेहर दे आसरे उडीकना शुरू कर दिंदे। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अगवाई इस करके बदल जाती है क्योंकि गुरमुख की अवस्था अंदरों बदल गई हुई है। हुण गुरमुख के मन उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे वाकां महावाकां असर करना पकड़ करनी शुरू करते हैं। आप उपदेशे समझे आप, आपे रचिया सब के साथ, आप किनो आपन विस्तार, सब किछ उसका ओह करने हार। उसते भिन्न कहो किछ होए, थान थनंतर
एक है सोए मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर एको सोए हरे आपे ठाकर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा हरे आपे ठाकर सेवक भगत हरे आपे करे कराए हरे आपे विखै विकसै जित भावै तित लाए। जब गुरमुख ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਉਦਮ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕੋ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕੋ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾ ਆਨੰਦਮਈ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮ ਪਾਉ ਖੋਇਆ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਸਭ ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਏ ਪਰਮ ਪੰਗਾ ਹਮ ਹੋਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਕਰੰਗਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਏ ਪਰਮ ਪੰਗਾ ਹਮ ਹੋਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਕਰੰਗਾ ਹਮ ਹੋਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਕਰੰਗਾ ਹਮ ਹੋਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਕਰੰਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਸੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੜ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੜ ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਫੜਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਯੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੜ ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, I was asked to say a few words as Bibi Jee's biographer in English first and then in Punjabi. I'll make it short and sweet. Firstly, I'm grateful to the trustees of the Gurdwara who asked me to release Bibi Jee's biography in Punjabi today. It's such an auspicious day when we're celebrating Guru Nanak Dev Ji's 546th birthday. I wish you all a very happy Gurpurb.
Now, there is a connection with today's celebration and Bibi Jee and Bebe Nanaki and Sultanpur. In 1969, Bibi Jee was in Sultanpur at the time of Guru Nanak Dev Ji's 500th birthday celebrations. She was saddened by the fact that there was no memorial for Guru Nanak Dev Ji's elder sister, Bebe Nanaki Ji, who was also the first Sikh disciple in the world. It was then that Bibi Jee decided to embark upon a huge task of building a memorial to Bebe Nanaki Ji. Consequently, there are now 2 memorials to Bebe Nanaki Ji in the world, a Gurdwara in Sultanpur and this one in Birmingham. Only a Brahmgiani like Bibi Jee could achieve that. It's impossible to acknowledge everyone who has contributed towards this biography, but I thank the Saat Sangat from Kenya, Canada, India, and England who provided their anecdotes. But my utmost gratitude is expressed to Bibi Jee's daughter, Nrinder Panji, who supported me constantly throughout this journey of writing the book and provided me with a lot of narrations. The English version of the biography was translated for me by Professor Joginder Singh Jogi in India. However, the editing that followed was difficult, as some things which are said in Punjabi do not necessarily have the same meaning in English, and the other way around. Then there's also the use of the third person in Punjabi, as in other languages like French, which is a form of respect when we refer to an older person as tusi, not tu. Now, these issues had to be overcome by appropriate formatting and standardization. Of course, we were being mindful not to offend anyone. Now, about myself, I met Bibi Jee in 1988, and since then she has enriched and influenced both my personal and professional life in ways I cannot possibly begin to describe. Over the years, many people have been inspired to write Bibi Jee's biography and document her life experiences, but she refused all of them. This demonstrates Bibi Jee's innate humility and the attributes of a Brahmgiani. Yet, without a biography, her outstanding achievements would not have been shared. Bibi Jee was one with God and saw him existing everywhere and in every heart. Her life clearly indicated that she had virtues of a Brahmgiani, and it is worth emphasizing that in Sikhism, a Brahmgiani is rare, but even rarer is a female Brahmgiani like Bibi Jee. Now, I know that Bibi Jee could have chosen any man or woman to write her biography, and the main ingredients needed for its successful completion would have been her blessings and her guidance. I felt very honored that as a woman, I was given the opportunity to write it, even though I have no virtues. But Bibi Jee blessed me in July 2000, granting me permission to embark upon this journey. She refused to talk about herself in detail for the book. Her exact words, steeped in humility, were, "Assi duniya vich neeਵੇਂ ho ke chalna hai." In May 2010, I started formulating my research notes and focused predominantly on writing until the completion of the book in April last year, and the English version of the book was launched 3 months later. Although many of you were disappointed that Bibi Jee's biography was not ready while she was physically with us, you have to appreciate that it took years of research and 2 journeys in India and Kenya to accumulate the information required. Realistically, Bibi Jee's exceptional life of 93 years is impossible to sum up in a 376 pages book in haste.
Now, having commenced this enormous project, there were times when I felt disheartened. However, the ever-present faith Bibi Jee had in God inspired me to maintain inner strength and the determination to persevere. Indeed, Bibi Jee used to say that we should recite Vaheguru and have faith so that we do not falter. I'm certain that I have been guided by Bibi Jee throughout the years that it has taken me to compile her biography. To all intents and purposes, I just held a pen to write, and Guru Sahib Ji's blessings made the rest possible. It is likely that I may not have reached everyone's expectations as a writer. Nevertheless, I ask Guru Sahib Ji, Bibi Jee, and the Sadh Sangat to forgive me for any shortcomings and errors I have made, as we say in the Ardas, Bhul Chuk Maaf Karna. Bibi Jee had always kept us, including me, close to her heart. And despite the love that often overflows us when we talk about Bibi Jee, the love that we can reciprocate for Bibi Jee never seems enough. And as a small token of my affection, I have financed the cost of publishing the book myself. Rest assured that Bibi Jee had anticipated that I would be questioned about money matters. Being far-sighted, Bibi Jee had carefully planned a different type of fundraising through the book. That is, all the proceeds from the sale of the book will be used towards the maintenance of both Bebe Nanaki Gurdwara in Sultanpur and Mata Nanaki Hospital, Anandpur Sahib. This was instructed by Bibi Jee. It was done a while ago, and it was decided that small donations would be made over a number of years as and when required. So, by purchasing the book for £20, the Sadh Sangat will be making their own donation for this very long seva and continuity of Bibi Jee's legacy. One of the most significant messages in Infinite Inspiration is the letter that Bibi Jee wrote to the Sadh Sangat in 1996. It depicted her wisdom and heartfelt declaration of devotion by giving accolade to the Sadh Sangat for accomplishing the enormous project of building Bebe Nanaki Gurdwara in Sultanpur Lodi. She had, in fact, taken the responsibility for it herself with dignity, divinity, and grace. She asked Guru Sahib Ji in her ardas to show compassion so that the Sadh Sangat would always do seva and simran. Bibi Jee added that by doing seva, one is humbled, and by doing simran, one's wisdom is exalted. And these are the two pillars of Sikhism. There is no substitute for Bibi Jee, who has loved us unconditionally as a mother. And although Bibi Jee is not with us today in physical form, she is here in spirit. It was Bibi Jee's wish for the Sadh Sangat, who she cherished as a gift from God, to remain united, to continue doing seva and simran, and maintain successfully the project she had started. And some of you may not know how unique the book Infinite Inspiration is. It happens to be the first biography of a Brahmgiani, a female one at that, in the Western world. Bibi Jee has really excelled in a male-dominated world. This book is available from my publisher, DTF Books, Soho Road, and on their website. Finally, there has been positive feedback from those who have read the English version of the biography. Some have said that it's changed their lives. And there are others who have come to the realization of Bibi Jee's attributes of a Brahmgiani, particularly how Bibi Jee served humanity nationally and internationally on a scale that only a Brahmgiani can do. This book then represents only a tip of the iceberg
of how the simplicity of Bibi Jee's way of life was so appealing. Quite aptly then, Bibi Jee is infinite inspiration. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बुक आप जी सामने आ चुकी है। बुक लैके उसनू पढ़ के ध्यान दे नाल शरधा दे नाल, क्योंकि शरधा दे नाल पढ़ के ते उसका सत्कार करना है। सो मैं भैन जी नू बहुत बहुत बधाई पेश करदा हाँ, आप साध संगत नू बहुत बधाई पेश करदा हाँ। बोले सोनिहाल। वाहेगुरु 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 A little bit about Bibi Jee was when she was widowed at the age of 23, she decided that she's going to spread her word in terms of, one, keep towards true Gurmat, but on secondly, help as many and help the needy, taking that right back to Bhai Kanhaiya Ji's time. And it wasn't just Sikh people that she would help people, anyone who's in the needy, and she never actually asked anyone for money. During this process that she's asking, gathering funds, gathering goods, gathering blankets for when earthquakes happened in places, for needy places. She was in Rwanda, she even went to places like Buj, and she was never acknowledged to the level that she should have been until a lot later. So Help the Age acknowledged her for 50 years of charitable work. But one of the greatest acknowledgements that she got, and probably any British citizen that could get, is the MBE award, which was given to her by the Majesty the Queen. Now, the value of an MBE award is actually one of the highest awards that any citizen of England could get. So in this way, it's showing us that on a global level, and a national level first, and then a global level, that Bibi Jee got this award. And even at the Help the Age ceremony, she still did not agree that she is worthy enough of such award. Just showing how humble Bibi Jee was, right from day one all the way to today. The work that she progressed, the work that she took forth in India, it's very difficult for a man to do this work in a country like in an upcoming third world country. Yet, as a woman, she went out there, she went to places which no man would go. Found where the memory of Bebe Nanaki Gurdwara was supposed to be made. This was found when they were excavating the place with the help of farmers and the children. They started the excavation and the work started on the Gurdwara, which is now a fully flourishing place in Sultanpur.
तरह के कहते हैं कि कबीर कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। उन्होंने जो शोभा है वो असी देखदियां ही प्रवान कर लेंगे हैं कि साढ़े को लफ्ज़ नहीं है जो कि असी उन्होंने वास्ते बोल सकीए। आप जी ने देखा ही इस वक्त जो इस वक्त एग्जीबिशन लाया हुआ है, आप जी सारे ने देखा है। बीबी जी होने ते असी सिफत सलाह कर नहीं सकते, साढ़े को लफ्ज़ नहीं हैं, पर सानू मूर्खां नूं उन्होंने इस तरह कार्य लाया, इस तरह कार्य लाया कि चैरिटियां उन्होंने चलाइया। इथोपिया के जिस वेले भुचाल आए उत्थे इतनी बैरानी हुई, बीबी जी हुणी आप उत्थे जाके उन्होंने सहायता की संगतां दी। जिस वेले 84 के दंगे होए उस वक्त उत्थे कोई जा नहीं सकता। असीं सारे उन्होंने अगे बेनती करते सी कि बीबी जी तुसीं ना जाओ। बीबी जी कहंदे तुसीं जो मर्जी करो, मैं क्यों कल्ला जिहदे नाल अल्लाह। बीबी जी हुणी इस तरह कहंदे हुंदे सन कि मैं कल्ली नहीं, गुरु महाराज जी मेरे सिर ते हन। ते बीबी जी हुणी इत्थों गए, इत्थों जाके उन्होंने पता नहीं किन्नियां कि संगतां दी वो जो अनाथ सन, जो विधवा सीगियां, उन्हां वास्ते इन्नी उन्होंने चैरिटी की। सिलाई दियां मशीनां दित्तियां, बर्तन दित्ते, बच्चों नूं फीसां तक उन्होंने बीबी उन्होंने दित्तियां। तो जो उन्होंने जो परोपकार है असीं दस नहीं सकते कि उन्होंने किन्ने क परोपकार सन। तो उस तो उपरंत बीबी जी उन्होंने जो कि पहलां तो उन्होंने सुल्तानपुर विखे गुरुद्वारा बेबे नानकी का बनाया, क्योंकि उन्होंने जाके पूछा सीगा कि गुरु महाराज जी तो इत्थे प्राहुणे आए सन, पर बेबे नानकी का घर किहड़ा है। क्योंकि बेबे नानकी का तो सौहरा घर सीगा, सौहरे घर दे विच गुरु नानक देव जी उन्होंने मिलने वास्ते आए सन। कहंदे ने कि उन्होंने घर किहड़ा है। तो फिर संगतां ने दस्सिया कि नहीं है। बीबी जी हुणी बड़े उदास होए। जिस वेले उदास होए तो उन्होंने उत्थे बीड़ा चुकिया कि बेबे नानकी का यादगार इत्थे असीं जरूर बनावांगे। सो बीबी जी उन्होंने सुल्तानपुर विखे गुरुद्वारा बनाया। उस तो उपरंत हॉस्पिटल बनाया। पोलियो के ऑपरेशन हुंदे हन उत्थे, ते जो गरीब कन्या हैं, जो लोड़वंद हैं, उन्होंने विआह होंदे हैं पहलां घर ही जाके करते सन, पर हुण तकरीबन 5 साल तो असीं सारे विआह उत्थे करीदे हैं, पर सारी चैरिटी लई। जो असीं किसी को मंगते नहीं हैं, जिन्ने सत्संग होंदे हैं, अखंड पाठ होंदे हैं, वो सारी ही माया असीं उत्थे लैके जाईदी है। होर भी जो किसी ने सेवा करनी होवे असीं उत्थे लैके जाईदी है। उस तो उपरंत बीबी जी उन्होंने आनंदपुर साहिब विखे माता नानकी के नाम पर, क्योंकि ये बेबे नानकी का घर सीगा ते वो माता नानकी के नाँ से जो कि गुरु महाराज 9वें पातशाही के माता जी सन, उन्होंने नाँ से हॉस्पिटल बनाया है। इस वक्त इन्ना मीनारा उच्चा है, मेरा ख्याल कि पंजाब दे विच उन्ना अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है। उत्थे भी तकरीबन मुफ्त जो पैसा नहीं दे सकता उन्होंने इलाज होंदे हैं लोड़वंदां दे। सो उत्थे भी असीं काफ़ी लंगर लाए दे हैं। सानू बीबी जी उन्होंने इसे दे नाल सानू मूर्खां नूं कारे लाया। इन्हां ही लफ्ज़ां दे नाल मैं खिमा दी जाचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Bibi Jee also emphasized on helping the needy. There was great help for poor who had polio, and even free eye camps were organized for the people. Bibi Jee gave women a platform and made them self-reliant, also gave them confidence to walk with their heads high, with grace and humility.
In 1999, on the 300th birth anniversary of the Khalsa, Bibi Jee laid the foundation stone of Mata Nanaki Hospital at Anand Sahib in Punjab. It was enormous because the land where the hospital is built today was originally a marshland, and a lot of work went into completing it. This was one of the last biggest projects Bibi Jee undertook and completed in order to offer services to the needy. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਓ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਗ ਸਿੰਘ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ 7 ਦਿਨ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ, ਉਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ
ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟਰਸਟ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।